Hi everyone, this is Dr. Sneha Thakkar, and we on this World Breastfeeding Week 2019. This is the last day, and we are going to try our level best so that we can solve as many queries as possible. We just have 1 hour, so let's try to solve as many queries. I will first start with introducing myself. I have been in this field for past 5 years now, and the passion for this started when I was working with an NGO, and where I realized that there are many primary mothers, new mothers who are not able to feed properly just because the latch was not correct, and then they were suffering from nipple soreness and mastitis and a lot of issues related to breast. So I was just thinking that this would be a better chance for me to become a lactation consultant. I am actually a homeopathic graduate and I pursued this field after my graduation. Also, I am a pregnancy fitness trainer because I feel that these days the chances for normal delivery are really bit going down. So I am trying my level best to make sure that every mother can do as many exercises as possible and can suffer less and go for the normal delivery because it affects breastfeeding. That's why my point of view is towards the breastfeeding, because the breastfeeding can be started as early as within 1 hour if it is a normal delivery. Apart from that, let's see what questions are, and let's try to answer the questions. Okay, I have received a question from Vikram Singh, and he has mentioned that मैम मेरा बच्चा अभी 25 दिन का है मगर वो माँ का दूध नहीं पीता, पास में जाता है और जोर जोर से रोने लगता है. So this विक्रम सिंह जी, अगर माँ का दूध बच्चा नहीं पी रहा है तो 25 दिन का है, तो पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है कि बच्चे की पोजीशन देखनी है कि सही से बच्चे को पकड़ा है कि नहीं. सो आपको बच्चे को देखना है कि उसको सही से मदर पहले तो ठीक से बैठी है कि नहीं. तो सबसे पहले मदर की पोजीशन चेयर पे, सिंस वी आर राइट नाउ लाइव, तो हम दिखा सकते हैं मदर की पोजीशन चेयर पे स्ट्रेट होनी चाहिए, उनकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए. एंड सेकेंडली बच्चे को आपको होल्ड करना है जो थोड़ा स्लैंट हो, जैसे कि 45 डिग्रीज पे स्लैंटिंग होना चाहिए. अगर बच्चा भूखा है तो ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लिया जाए. अगर बच्चा भूखा नहीं है तो फिर वो कितना भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की कोशिश कीजिए, वो नहीं पिएगा. अगर उसको नींद आ रही है या उसको और किसी रीजन से वो रो रहा है तो वो पहले चेक कर लिया जाए. वंस आपने उसको बच्चे को ले लिया है ठीक से पोजीशन में, उसके बाद आप अगर मदर का निप्पल आपको चेक करना पड़ेगा. मदर का निप्पल अगर सही से बाहर है तो बच्चा सही से लैच कर पाएगा. अगर मदर का निप्पल सही से बाहर नहीं है तो बच्चे को लैच करने में तकलीफ होती है क्योंकि वो ब्रेस्ट पे से सरक जाते हैं नीचे. तो मदर को बोलिए, आपकी वाइफ को बोलिए कि उसका हेड जो है वो सही से ऊपर होल्ड करे. ये होने के बाद अगर फिर भी वो छोड़ रहा है उसका लैच, तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको सही से ग्रिप नहीं मिल रही है. तो इन दैट केस आप चाहे तो निप्पल शील्ड करके एक सिलिकॉन का निप्पल शील्ड आता है, वो आप यूज कर सकते हो, जिससे बच्चा सही से लैच भी करेगा और फटाफट वो खींचते भी है. इसको यूज करने से ब्रेस्ट फीडिंग में या ब्रेस्ट मिल्क में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. तो आप इजीली निप्पल शील्ड यूज कर सकते हैं.
We will go to next question. This is done. And okay, so we have Naina asking us a lot of questions. So I will try to solve questions one by one. Let's start with the first one. Do smaller breasts produce less milk? Okay. All right. So yeah. So, hi Naina. The breast size for every mother who is watching this right now, I would like to share this very happily that it doesn't matter whether your breasts are large or small, whether your nipples are large or small. It doesn't matter at all. The breast size, the nipple size doesn't matter. It just matters that you have to keep continuously feeding तो ही आपका breast milk बनते जाता है. ब्रेस्ट के साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है. इट इज एक्चुअली द मैमरी ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट के अंदर होते हैं. सो मैमरी ग्लैंड्स हर फीमेल के सेम होते हैं. सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है उसके ऊपर रहता है कि अगर फैट रहेगा तो ब्रेस्ट बड़े रहते हैं, अगर फैट नहीं रहेगा तो ब्रेस्ट छोटे रहते हैं. बाकी मैमरी ग्लैंड्स जिसमें एक्चुअली दूध बनता है, जिसमें एक्चुअली दूध स्टोर होता है, वो हर फीमेल का सेम ही होता है. सो नो, द ब्रेस्ट साइज, द निपल साइज डजंट मैटर in production of breast milk. So this, let's see the next question. Okay, so I have to answer one by one. Let me see. Okay, where is it? Okay, is it? All right, I'll ask. Okay, this is a very common question. So I will answer this because many mothers do have this question. So I'm answering two questions at a time. No, I can't. Okay, fine, no problem. So answer this question. So Naina Nanavre has again asked a question. Is it common to have uneven milk supply? Yes, it is common sometimes to have uneven milk supply. That means uneven milk supply का मतलब होता है कि breast के एक side से मिल्क ज्यादा बन रहा है और दूसरी बाजू में मिल्क कम बन रहा है. सो ये जो है वो नॉर्मली जब शुरुआत होती है तब ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो पोजीशन के हिसाब से, कोई भी एक साइड की पोजीशन के हिसाब से बच्चा जो है वो चूज करता है कि उसको कौन सी साइड का ब्रेस्ट प्रेफर करते हैं. सो बेबीज कभी कभी राइट साइड में ज्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ बेबीज लेफ्ट साइड में प्रेफर करते हैं. तो जिस साइड में सबसे ज्यादा लैच होता है उसी साइड में मिल्क और भी ज्यादा बनता है, क्योंकि जितना बच्चा फीड करेगा उतना ज्यादा जो ग्लैंड्स है जो दूध बनाते हैं मैमरी ग्लैंड्स वो स्टिमुलेट होते हैं, तो उतना ही ज्यादा मिल्क सप्लाई बढ़ते जाता है. सो इट इज कॉमन टू हैव अनइवन मिल्क सप्लाई समटाइम्स इन वन ब्रेस्ट एंड इन द अदर ब्रेस्ट इट कैन बी लेस मिल्क सप्लाई. But don't worry, that doesn't harm breastfeeding in any way. You just have to make sure कि आप जो दूसरा ब्रेस्ट है जिसमें थोड़ा कम मिल्क सप्लाई आ रहा है, तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को जितना हो सके उतना फीड कराए उस ब्रेस्ट से. मैक्सिमम हो सके तो 4 आवर्ली 6 आवर्ली उस ब्रेस्ट से फीड कराए, ताकि बेबी जो है वो ब्रेस्ट को जो है वो मैमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेशन मिले और उधर भी मिल्क सप्लाई स्लोली स्लोली बढ़ते जाए. So that's done. Okay, so there's a question that what if my baby doesn't latch right away? So
दिस इज अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस में। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो फर्स्ट टाइम मदर्स है वो लोग हमेशा आते हैं मेरे पास कि बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट आई गेट from my patients as well. So अगर बच्चा baby is not latching right away, it's not that the baby is not able to do it. To be very frank, babies may already latch या mouth open करने का reflex is God gifted. As soon as you touch the baby on the cheeks, you touch the baby near the lips, or even if the nipples touch near the lips, the baby always opens mouth wide. As soon as the baby opens mouth wide, you have to push the head of the baby into the breast and not the breast into the baby. बेबी का हेड आपको ब्रेस्ट की तरफ लेके आना है तो ही वो लैच जो है वो परफेक्ट होता है। बच्चों से कभी भी लैच में प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि बच्चों का माउथ ओपनिंग उनको गॉड गिफ्टेड रहता है। वो एक रिफ्लेक्स होता है जो वो पहले से ही सीख के ही आते हैं। सो लैच का अगर प्रॉब्लम होता है सो इट्स अस दैट वी आर नॉट एबल टू गिव द ब्रेस्ट और टेक द बेबी प्रॉपर्ली इनटू द पोजीशन। सबसे पहली चीज अगर आपको ये चेक करनी है तो ये चेक करना है कि बच्चे को आपने सही से पोजीशन किया है कि नहीं। ये जानने के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि बच्चे का कान और उसका शोल्डर एक ही अलाइनमेंट में, एक ही लाइन में है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हम इस तरह से ही खाना खाते हैं, ना कि हम ऐसे खाना खाते हैं। ओके, सो बच्चे का कान और शोल्डर जो है वो एक अलाइनमेंट में है। इसका मतलब है कि बच्चे की नेक जो है वो टर्न नहीं हुई है। दैट मीन्स बच्चा कंफर्टेबली पी सकेगा दूध। अगर बच्चे का मुंह टेढ़ा रहेगा या नेक टेढ़ी रहेगी तो बच्चे को खींचने में तकलीफ होती है, तब बेबी लैच नहीं कर पाते। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बट बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि आपको सिर्फ बच्चे की अलाइनमेंट देखनी है। जब आप बेबी को ले रहे हो तो उसका ईयर, शोल्डर और हिप एक ही पोजीशन में आना चाहिए, एक ही लाइन में आना चाहिए, तो बच्चा सही से लैच करेगा। और अनलेस एंड अनटिल बच्चे ने मुंह नहीं खोला है पूरा, तब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट ऐसे जबरदस्ती मुंह में नहीं डालेंगे। यू विल हैव टू वेट टिल द बेबी ओपन्स माउथ कंप्लीटली एंड देन यू विल टेक द बेबी टू द ब्रेस्ट। आप ब्रेस्ट को ऐसे नहीं लेके जाओगे, बेबी को ब्रेस्ट की तरफ लेके आना है। दैट्स द साइन ऑफ अ परफेक्ट लैच। Okay, so let's answer this. Can cabbage help relieve engorgement? Yes. So engorgement पहले तो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। Engorgement is जब breast जो है they become very hard, okay, and because the milk जो है breast में या तो मदर को मिल्क ज्यादा बन रहा है और सप्लाई कम, मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, यानी दूध बन ज्यादा रहा है लेकिन बच्चा ज्यादा पी नहीं रहा है। ऑब्वियसली ये एक केस में ऐसा होता है जब बेबीज छोटे होते हैं तो उनका टमी भी छोटा रहता है, सो मदर को ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिल्क बन रहा है, सो ऐसे केसेस में भी एंगोजमेंट हो सकता है। दूसरा एंगोजमेंट तब होता है जब कोई ब्रेस्ट को या निप्पल को टच करे, जैसे कि हॉस्पिटल्स में काफी बार ये देखा गया है कि आया बाइज होते हैं या सिस्टर्स होते हैं, वो ब्रेस्ट को टच करते हैं विच हर्ट्स द ब्रेस्ट टिश्यू एंड देयर इट कॉजेस एंगोजमेंट बिकॉज इन्फेक्शन एंटर होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं या निपल्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। सो देयर आर चांसेस कि वहां पे ज्यादा एंगोजमेंट हो जाए। एंगोजमेंट यानी ब्रेस्ट जो है वो हेवी हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, कड़क फील होने लगते हैं। इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम मेस्टाइटिस, जिसका मतलब होता है कि ब्रेस्ट जो है वो उसमें इन्फेक्शन होना। सो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड एंगोजमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट केस। So engorgement में somebody has asked, does cabbage leaves relieve engorgement? So yes,
बेसिकली कैबेज का मतलब होता है ठंडा, सो एंगॉजमेंट यानी ये जो पूरा है वो पूरा भर गया है. सो इन दैट केस, if so it will relieve only if the engorgement is related to the pain. यानी वहां पे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ही एंगॉजमेंट में कैबेज लीव्स हेल्प करती है, बिकॉज इट्स लाइक अ कोल्ड फर्मेंटेशन, ठंडे पानी का जो सेक करते हैं वैसा रहता है. अगर एंगॉजमेंट प्रॉपर है जिसमें दूध की जो गाढ़ बोलते हैं हम, कि दूध की गाढ़ बनी है, सो ऐसे केसेस में कैबेज लीव्स हेल्प नहीं करती है. ऐसे केसेस में गरम सेक या गरम पानी का सेक, हॉट फर्मेंटेशन, ये लेना पड़ता है. तो ही वो डक्ट जो है या वो मिल्क के जो गाढ़ जो बनी हुई है वो रिलीज हो जाती है, रिलीव हो जाती है. So these two things are absolutely different. So please do not try anything unless you ask your obstetrician or unless you ask a lactation consultant कि exactly आपको क्या करना है. क्योंकि there is a harmful thing. अगर आपको engorgement हुआ है जिसमें मिल्क की गांठ बनी है, सो कोल्ड फर्मेंटेशन ऐसे केसेस में कोई हेल्प नहीं करता है, उल्टे का वो आपकी प्रॉब्लम बढ़ा देगा. तो इसके लिए कोई भी सेक, कोई भी मसाज, कुछ भी ब्रेस्ट पर करने से पहले प्लीज कंसल्ट ऑब्स्टेट्रिशियन और प्लीज कंसल्ट अ लैक्टेशन कंसल्टेंट. Okay, so there's a question, is it normal not to have a menstrual cycle while you're breastfeeding? So yes, so सबसे पहले अगर आपको देखना है तो breastfeeding का एक क्या बोलते हैं, पूरा एक हार्मोन का साइकिल होता है. सो breastfeeding जो है, जो ब्रेस्ट मिल्क बनता है, इट इज मेड बाय एन हार्मोन नोन एज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जिससे ब्रेस्ट मिल्क बनता है. सो ब्रेस्ट मिल्क जब बन रहा है तो प्रोलैक्टिन आपके ब्लड में, आपके बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है. सो जब तक प्रोलैक्टिन आपके बॉडी में है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ सकता, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो पीरियड्स है वो भी एक हार्मोन रिलेटेड है. सो जब तक प्रोलैक्टिन है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के जो हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, वो हार्मोन्स का लेवल हाई नहीं होता है. इसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तक नहीं आ सकता जब तक आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो. दैट्स अनदर इंडिकेशन व्हाई लैक्टेशन, natural lactation is known as natural contraceptive, because there is no menstrual cycle, there is no egg that is released, female egg ही release नहीं हुआ है, तो pregnancy के chances जब तक आप breastfeeding कर रहे हो तब तक कम होते हैं. But mind you, कम होते हैं, there are still certain % of chances that some females still can get pregnant. So it's just a form of natural contraception with its own side effects. So you can see it for yourself. Okay, so there are questions which I would like to answer together. First thing is why there are certain females जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और कुछ फीमेल्स जो है वो कम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. So please understand one thing is, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, हम क्यों फोर्स करते हैं दैट यू ब्रेस्ट फीड योर बेबी और एटलीस्ट गिव योर ब्रेस्ट मिल्क टू योर बेबी, इज बिकॉज इट्स लाइक अ कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड गिफ्ट फ्रॉम योर बॉडी टू योर बेबी. सो आपके बेबी की नीड कितनी है, आपके बेबी की नीड क्या क्या है, उसके बेसिस पे ये आपका जो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, वो बनता है.
आप क्या खा रहे हो, आपके बेबी के न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे इट्स अ कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड मिल्क दैट इज बीइंग मेड बाय द मदर फॉर द बेबी। सो अगर डिमांड कम है आपके बेबी की तो मिल्क जो है वो आपका कम बनता है। अगर किसी के बेबी की डिमांड ज्यादा है, टमी साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर किसी के बेबी की डिमांड ज्यादा है तो वो मदर्स जो है वो ज्यादा मिल्क बनाती है। सो इट्स वेरी मच लाइक हम लोग कैसे खाते हैं, कुछ लोगों की भूख बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों की 2 रोटी में हो जाती है, कुछ लोगों की 1 रोटी में हो जाती है। ऐसे ही बेबीज में भी अलग अलग हंगर या अलग अलग एपेटाइट होती है। सो बेस्ड ऑन द एपेटाइट ऑफ द बेबी, based on the demand of the baby, the mothers produce milk। अगर बेबी की डिमांड ज्यादा है तो वो मदर जो है वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगी क्योंकि वो ज्यादा फीड करने वाली है। अगर कोई बेबी की डिमांड कम है तो उसके बेसिस पे वो मिल्क बनता है। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ कि मेरा मिल्क कम बन रहा है उसका ज्यादा बन रहा है। इट्स जस्ट दैट आपका बेबी फीड कर रहा है, सही से फीड कर रहा है, अच्छे से सो रहा है, खेल रहा है, दैट मीन्स आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो परफेक्ट है आपके बेबी के लिए। Okay, so if somebody does a breast reduction surgery, it's usually not done in the first primary में नहीं किया जाता है, first time mothers, but second time mothers में कभी-कभी breast reduction surgeries हुई रहती है। Breast reduction surgery is basically removing the breast tissue, that means removing the breast fat, यानी फैट जो है आपके ब्रेस्ट में उसको निकाला जाता है, जबकि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो मैमरी ग्लैंड्स में बनता है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। सो नो, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी जो है वो बिल्कुल ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई या ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में या ब्रेस्ट मिल्क के टेस्ट में कोई भी ऑल्टरेशंस नहीं होते हैं। You can go for breast reduction surgery and still you can, if you conceive second time, you can still breastfeed your baby. There won't be any harm done to your baby. Okay, the question. This is very commonly asked to me कि breastfeeding, does it hurt? So to be very frank, all the new mothers, I would like to tell you all that breastfeeding in the initial phase, that is like for 30 seconds or for few seconds in initially, it does hurt because you are new, the baby is new, to the latch जो है वो होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बेबी को, और बेबी के सकिंग में थोड़ा सा हर्ट होता है। सो इट हर्ट्स ओनली इन द बिगिनिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स और फॉर 30 सेकेंड्स मैक्स। अगर उससे ज्यादा पूरी ब्रेस्ट फीडिंग में आपको पेन हो रहा है, please consult a lactation consultant as early as possible, because no, the breastfeeding doesn't hurt for the entire session of breastfeeding। 20-25 मिनट 30 मिनट्स तक आप ब्रेस्ट फीड इजीली कर सकते हो विदाउट गेटिंग हर्ट। ओनली द इनिशियल बैच ऑफ 30 seconds max will hurt। दैट मीन्स इट्स जस्ट लाइक अ स्टिंग। ऐसा हर्ट मतलब बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल स्टिंग जैसा होता है, बाकी इट डजंट हर्ट। सो प्लीज इफ यू आर फीलिंग दैट आपको पूरी ब्रेस्ट फीडिंग में पेन हो रहा है, प्लीज कंसल्ट अ लैक्टेशन कंसल्टेंट एज अर्ली एज पॉसिबल।
Okay, so there's a question which mentions that if I have thrush or mastitis, okay, so usually mother ka thrush is of no issue for us, but अगर baby को thrush है, that means oral thrush जो baby को होता है, तो that is nothing but एक type का fungal infection होता है जो baby के mouth में होता है. So अगर वो baby को है या फिर mastitis है mother को, तो can you breastfeed or no? So yes. Firstly, अगर बेबी को ओरल थ्रश हुआ है, so oral thrush is kind of a procedure in which the baby is very much uncomfortable. So उसको comfort करने के लिए you should be breastfeeding. It is the best way to make sure that baby doesn't get scared and he or she the baby feels secured while breastfeeding. So that's one indication that yes, you can breastfeed while even if the baby has oral thrush, because your breast milk has natural antibodies, it has natural fighting immunity के proteins होते हैं आपके breast milk में, so which will not only help the baby build up the immunity, but it will help in recovery of the baby's oral thrush as fast as possible. Secondly, mastitis, but make sure that you are also getting treated simultaneously, क्योंकि oral thrush जो होता है वो जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो आपके निप्पल और आपके एरियोला पे भी वो फंगल इन्फेक्शन लग सकता है. सो इट्स अ साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट चालू होनी चाहिए मदर की और बेबी की दोनों की, सो यू कैन कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो. सेकेंडली मेस्टाइटिस अगर हुआ है, सो मेस्टाइटिस हुआ है अगर वन ब्रेस्ट में ही मेस्टाइटिस हुआ है, सो यू कैनॉट मतलब इफ यू वांट बट यू कैनॉट ब्रेस्ट फीड, बिकॉज इफ इट इज ब्लीडिंग, इफ इट इज हैविंग पस in it, then you are not supposed to breastfeed. Agar if it is a simple mastitis, so you can breastfeed the baby, but then breastfeeding from the other breast, the breast which is affected, आपको वहां से pump and dump mechanism करना पड़ता है. That means you have to pump the milk, remove the milk, express the milk from that breast and dump it. You cannot use it because that milk has high content of bacterial infection, so it can harm the baby. So you have to feed from the other end. Once you are on the medications for breastfeeding, एक बार आपने breastfeeding की medicines चालू कर दी है, तो उसके बाद आप feeding चालू कर सकते हो. Once the antibiotics, the medicine starts flowing in your bloodstream, तो वो bacteria को kill करना start करते हैं. So then you can feed the baby. Once your fever goes down, once your redness on the breast, once the pus infection goes down, then you can slowly start feeding your baby. So that's not a problem, but please do make sure that you are completely recovering from that mastitis and not entering into a next stage which is known as breast abscess. So breast abscess का एक अलग ही stage होता है in which it's contraindicated to breastfeed. Cannot breastfeed अगर आपको breast abscess हुआ है तो. So please make sure first that it is mastitis only. Please do not self-diagnose and try and consult your lactation consultant or try and consult your OBGYN as early as possible. Yes, if somebody has asked a question that I don't enjoy breastfeeding, so can I just pump and give my milk? Absolutely okay. If you are a mother who is not feeling comfortable, see, we are as lactation consultants, we understand that what every mother must be going through while you are in pain, while you are in agony, and still you have to breastfeed the baby, sit for longer durations. So yes, in certain cases, जिसमें if the mother is not able to enjoy breastfeeding, if the mother is not able to sit for longer durations because of her back problems, if the mother is not, the mother is getting pain in the, if it is a C-section, the mother is getting enormous pain. So yes, in such cases, we say that it's okay if you don't want to breastfeed, you can pump your milk and give it to the baby. The only difference that takes place is that when your baby is breastfeeding, baby जो latch करता है, baby जो suck करता है,
उसका इम्पैक्ट ब्रेन पे यानी आपके ब्रेन पे अलग होता है, तो उसका सप्लाई अलग रहता है। प्लस बेबी का जब टंग और सलाइवा जो है वो आपके स्किन को, ब्रेस्ट को, एरियोला को जब टच करता है, सो आपके बेबी के नीड के हिसाब से द एंटीबॉडीज, दैट इज द इम्यूनिटी पार्ट जो है वो बनता है, जो आपके बेबी की रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज द मेन, एंड द लास्ट part is that the security, the comfort that the baby gets while you are breastfeeding. So these are the only things which matters. But if you are really in agony, if you are really in pain, we don't force you to breastfeed. We still would like to tell you all that you all can pump the milk, because breast milk जो बनता है वो any which ways आपके बेबी के रिक्वायरमेंट से ही बनता है, so it is still good enough for your baby. So don't force yourself that नहीं मेरे को करना ही है breastfeed करके. If you are not comfortable, it's okay to pump and give the baby your breast milk. Okay, so if you find, so first of all, I would like to say that please, while you are pregnant, when you start in your 7th month, so you have to do regular checkups of your breast. That means you can do it yourself, or you, whenever you visit your OBGYN, you can get your breast checked. काफी लोगों को ये लगता है कि डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट को चेक करना चाहिए. नो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली प्लीज कीप अ चेक ऑन योर ब्रेस्ट. कहीं पे भी आपके ब्रेस्ट में कोई भी छोटी सी गांठ अगर है, कहीं पे भी छोटा सा सिस्ट भी है, तो प्लीज इन्फॉर्म योर OBGYN, और प्लीज इन्फॉर्म योर सर्जन और योर मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म कीजिए, टू मेक श्योर that the breastfeeding will be perfect after the delivery. You have to check your nipples as well. यानी जब आप pregnant हो तो काफी mothers में breast जो है उसमें nipples जो है वो कभी अंदर चले जाते हैं, या that is known as nipples inverted हो जाते हैं, या nipples flat हो जाते हैं. तो अगर ये हम डिलीवरी के बाद देखते हैं कि nipples जो है वो inverted है या flat है, तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि तभी वो निपल्स को नॉर्मल करने के लिए जो टाइम लगता है वो काफी समय लगता है. सो टिल दैट टाइम द ब्रेस्ट फीडिंग becomes a little difficult task. Inverted nipples में भी breastfeeding becomes a little difficult task. I know that बेसिकली breastfeeding is a latch, and latch जो है वो nipples पे नहीं होता है, but still I have seen many cases which in which I have seen there is a flat nipple, and that's the reason the baby just cannot grip onto the breast properly and baby slips away. So yes, nipple becomes one of the important part for the breastfeeding latch. So what you can do is, आप जब प्रेग्नेंट हो, व्हेन यू आर इन 7th month 8th month, तभी ही आप अपने ब्रेस्ट को चेक कर लीजिए, निपल्स आपके बाहर है कि नहीं, एरियोला बराबर है कि नहीं, ब्रेस्ट में कहीं पे भी कोई गांठ है या कुछ भी है. सो देन यू विल कम टू नो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम. सो अगर आपका इन्वर्टेड निपल है या फ्लैट है, सो आप तभी से ही उसकी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हो. व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट तभी से ही आप उसकी ट्रीटमेंट चालू करोगे, तो बाय द टाइम बेबी जब बॉर्न हो जाता है तो तभी तक आपका निपल्स जो है वो इरेक्ट एंड प्रॉपर हो जाते हैं. सो फीडिंग जो है वो तुरंत इस्टेब्लिश हो सकती है. So my advice to you is please keep checking your breast for cyst, for nipples on regular basis. Please check that whether your breast skin, ब्रेस्ट की जो ये व्हाइट कलर की स्किन होती है वो हेल्दी है कि नहीं, उस पर रिंकलिंग नहीं है ना, उस पर कोई ऐसे डॉट 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 जैसा नहीं है ना, वो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए. सो and there is something, if the nipples, if the breast is becoming hard as rock. So hard as rock का meaning है that the breast is now becoming engorged.
So breast engorgement is a very common problem that is faced by many mothers. It is seen especially in mothers whose milk supply is more than the demand. यानी बच्चे की डिमांड कम है बट मदर में बहुत ज्यादा सप्लाई हो रहा है. It could be because of various reasons, we don't know, but majority of the time ऐसा होता है, इंडिया में majority of the time ऐसा होता है कि as soon as the mother delivers, she is being given सुआ की सब्जी, then मेथी के दाना, then there is some laddus are made. So there are too many things which are given to the mother to produce more milk. So my advice is that as long as your baby is feeding, that is the only requirement for your brain to know कि इतना बेबी का डिमांड है, इतना ही सप्लाई बनाने का है. अगर आप मेथी के दाना, सुबह की सब्जी, सब इतना ज्यादा आप खुद को न्यूट्रिशन ये सारा जो देते रहोगे, जिससे मिल्क सप्लाई, कुछ फीमेल्स में ये काम करता है कि मिल्क सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो जाता है. एंड व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ मिल्क सप्लाई, सो ब्रेस्ट जो है वो एकदम हार्ड हो जाता है, क्योंकि दूध वहां पे जमा होके, दूध इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू कंटेन ग्लूकोज, दैट इज शुगर. सो शुगर जो है वो वहां पे जमा होके क्रिस्टलाइज बन जाता है, क्रिस्टल जैसा बन जाता है, तो वहां पे गांठ बन जाती है. So that is why your breast becomes as hard as rock. That is known as engorgement. तो ऐसे केसेस में ही हम बोलते हैं कि वार्म फर्मेंटेशन ले लो, ताकि वो गाढ़ जो है वो खुल जाए, ताकि वो जो दूध की गाढ़ बनी है वो पिघल जाए और फिर स्लोली स्लोली मिल्क का जो फ्लो है वो चालू हो जाए. बट आई वुड स्टिल सजेस्ट दैट इफ पॉसिबल, अगर आपको मिल्क सप्लाई आपका बढ़ाना है, तो देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज बेबी को लैच कराओ. जितना ज्यादा आप फीड कराओगे बेबी को, उतना ज्यादा आपका मिल्क सप्लाई बढ़ते जाएगा. यानी उतना ही जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई होएगा. एक्सेस ऑफ मिल्क अगर है, सो आई कैन एडवाइज यू फॉर वन थिंग. इफ यू फील आपका ब्रेस्ट बहुत ही हैवी होने लग गया है, तो टू अवॉइड एंगॉर्जमेंट, वो ब्रेस्ट एकदम हार्ड ना हो जाए, यू पंप एंड कीप द मिल्क. यू कैन यूज इन टू वेज. वन, जब आप सो रहे हो तो कोई और बच्चे को फीड कर सकता है अगर आपका मिल्क बहुत ही ज्यादा बन रहा है तो. एंड टू, यू कैन डोनेट द मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क डोनर आप बन सकते हो एंड यू कैन डोनेट इट टू समबडी एल्स. इट्स नॉट गोइंग टू हार्म एनीबडी, इट्स गोइंग टू जस्ट गिव वन बेबी अ गुड ब्रेस्ट मिल्क. Okay, it's normal to have a let down reflex. So let me explain what is let down reflex first. So let down का meaning होता है कि when you are having when you listen to the baby, so आपका milk जो है वो nipples में से बाहर आने लगता है. That is normal let down reflex. So let down reflex is basically meant only for the mothers, जिसमें आपके जो हार्मोन है वो काम करता है. द हार्मोन इज नोन एज ऑक्सीटोसिन. ये हार्मोन जो है वो लेट डाउन रिफ्लेक्स में हेल्प करता है. सो इन सच केस, अगर आप बेबी का फोटो भी देख लेते हो, अगर आप बेबी को क्राई करते हुए सुन लेते हो, अगर आपको आपके बेबी की याद भी आती है, तो भी नॉर्मल है कि आपको लेट डाउन रिफ्लेक्स, यानी आपका दूध जो है वो निपल्स में से बाहर आना चालू हो जाएगा. इट्स जस्ट अ साइन ऑफ मदरहुड, that how much you love your baby and how much you miss your baby. So it's absolutely normal to have a let down reflex. Apart from this, a let down reflex इज अ हार्मोनल इशू. तो इसका ऑपोजिट भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर स्ट्रेस में हो, अगर आप गुस्से में हो, एंगर है, अगर आपको थोड़ा सा भी टेंशन हो गया है, अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा रोते हुए देख के एंशियस हो जाते हो, तो इसका ऑपोजिट भी हो सकता है. दैट इज द मिल्क फ्लो कैन स्टॉप सडनली. सो बेसिकली ऑक्सीटोसिन, ये जो हार्मोन है, वो अपने इमोशनल ब्रेन पार्ट से काफी मिलता जुलता है.
सो व्हाट इट डज इज, अगर मदर बहुत हैप्पी है तो मिल्क जो है वो इजी फ्लोइंग रहता है, ब्रेस्ट में से इजीली फ्लो होता है। अगर मदर बच्चे को देख के एकदम स्ट्रेस हो जाती है, एकदम कुछ टेंशन आ जाता है, या नॉट ओनली बच्चे को देख के बट अगर मदर को कोई भी प्रकार का स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, सो देन इट विल इमीडिएटली अफेक्ट हर मिल्क फ्लो। मिल्क फ्लो जो है वो एकदम सडनली डाउन हो सकता है या कम हो सकता है। So my advice to every mother there is, please be as happy as possible throughout your pregnancy and throughout the delivery phase while you are breastfeeding, because आपका इमोशनल पार्ट थोड़ा सा भी आपके बच्चे पे बहुत असर कर सकता है। So try to be as happy as possible. That's the reason I tell many mothers to enroll into pregnancy yoga, postnatal yoga and मेडिटेशन प्रोग्राम्स, क्योंकि ये सारे जो प्रोग्राम्स है इट एलिवेट्स योर मूड, इट कीप्स यू हैप्पी, इट कीप्स योर माइंड रिफ्रेश्ड एंड स्ट्रेस फ्री फ्रॉम as many things as possible, because हम after all females हैं, तो हमको अगर घर पे कोई ये भी नहीं आई, काम वाली बाई नहीं है, still we get so much stress, और हम अगर कुछ काम रह गया है तो still we get so much stress. So my advice is, as possible as much as possible by you, try to make sure that you are as happy as possible throughout the pregnancy and throughout the delivery, because your happy hormones will be passed on to your baby and your baby will be very, very happy. Okay, so there's a question from खुशी तनवर. So hi खुशी. So आपने जो पूछा है 2.5 महीने का आपका बच्चा है, तो 2.5 महीने के बच्चे में एनी बेबी व्हेन यू फीड, अगर वो दूध वॉमिट आउट कर रहा है, सो यू हैव टू सी कि व्हाट एग्जैक्टली द बेबी इज वॉमिटिंग आउट. अगर जैसा दूध पिया है वैसा का वैसा ही दूध अगर बच्चा वॉमिट आउट कर रहा है, दैट मीन्स यू आर ओवर फीडिंग योर बेबी, यानी बच्चा जो है वो ओवर फीड कर रहा है. तो आपको एक टाइम शेड्यूल रखना पड़ेगा कि मे बी यू विल फीड ओनली फॉर 20 minutes और 30 minutes एंड देन यू वोंट फीड द बेबी. तो ही वो जो उसका जो टमी का साइज है उसके हिसाब से ही वो फीड करेंगे. अगर बेबी कर्डल्ड मिल्क, यानी जब दूध वो बाहर निकालते हैं तो वो फटा हुआ दूध जैसा अगर दिख रहा है, कर्डल्ड मिल्क अगर वॉमिट आउट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इट्स नॉर्मल रिगर्जिटेशन यानी जो दूध है वो ऊपर आ रहा है. सो दैट वाज जस्ट एन इंडिकेशन कि जब बेबी ने दूध पिया रहेगा उसके पहले बेबी के पेट में हवा बहुत ज्यादा रहेगी और स्पेस थोड़ी कम रहेगी. सो जैसे ही आप उसने दूध पीना चालू किया तो वो हवा जो है वो बाहर आने की कोशिश करती है एज अ बर्प. वो हवा बाहर आता है तो उसके साथ कर्डल्ड मिल्क आता है. So it is normal, but you just have to see whether the baby is vomiting out milk or whether the baby is vomiting out curdled milk. अगर मिल्क है, प्रॉपर मिल्क है, तो वो ओवर फीडिंग के साइंस है, और अगर कर्डल्ड मिल्क है तो इट इज जस्ट एन इंडिकेशन दैट बच्चा दूध पीने से पहले बहुत ज्यादा रोया रहेगा, इसके लिए उनके पेट में ज्यादा हवा रहेगी. सो मेक श्योर कि जब आपको फीड करना है तो आप बच्चे को नींद से उठा के, या वो रोए नहीं तब तक आप वेट नहीं करो, उसके पहले ही उसको आप फीड के लिए ले लीजिए.
Okay, so if your so nipple soreness अगर है या nipple bleed कर रहे हैं, so that's an indication that um, that's an indication that nipples were actually harmed by something. So you really need to look out for or watch out for कि exactly कहाँ पे problem हुई थी. So please, my advice is do not allow anyone to touch your nipples, anyone to press your breast when you are in the hospital as well. कोई भी आया भाई को या कोई भी sister को आप breast को हाथ लगाने के लिए नहीं दीजिए please, because it can harm the breast tissue, it will harm the areola, it will harm the nipple, and which causes in first place the nipple soreness and the cracks in the nipple, जो nipple cracks होते हैं. Okay, if you are bleeding, अगर nipple soreness है या ये nipple cracks भी है, and if you are bleeding, yes, you can still feed the baby. Make sure you maintain the hygiene of the nipple and you just wipe off the breast with wipe off the nipples before you start feeding the baby. Continuing feeding the baby on such a nipple will help in healing the nipple cracks and nipple soreness as fast as possible. So please do continue feeding. Okay, to be very frank, I don't know. Somebody has asked, is it normal to smell like maple syrup if you're taking fenugreek seeds to increase the milk supply? So first of all, maple syrup ka smell I actually don't remember. But if you're using fenugreek seeds to increase the milk supply, I have already discussed this in our previous session, that in this previous time period, that please try as much as possible not to take fenugreek seeds, that is मेथी के दाना होता है, then flax seeds लेते हैं कुछ लोग, सुआ की सब्जी खाते हैं. So don't try not to use all these things to take the products to increase the milk flow. The milk flow of the baby is only increased by the latch. As much as you as much as your baby demands, you feed the baby. जितना ज़्यादा feed करोगे, stress free feeding करोगे, उतना ज़्यादा आपका milk flow या milk supply बनते जाएगा. This I already explained you all. It's all dependent on the oxytocin levels. आपका oxytocin level, the hormone, is based on your emotions. So if you are very happy, if you're stress free, then the hormone will be produced in abundance, and at the same time the milk flow will be continuous. So you don't have to take any fenugreek seeds or any other products also like shatavari or anything. You don't have to take all these things to increase the milk flow. We just suggest products like this only in females who for whom there was a C-section. तो C-section में कैसा रहता है कि मदर ने खाया पिया ही नहीं है कुछ, for your nil by mouth for first 12 hours, then after the delivery also for 12 hours you are absolutely having nothing. 6 घंटे आप कुछ खाते नहीं हो, उसके बाद आपको सिर्फ लिक्विड्स पे रखा जाता है. सो एब्सोल्युटली यू आर डिहाइड्रेटेड. इसकी वजह से आपके बॉडी को नरिशमेंट मिलता रहता है, सो मिल्क नहीं बनता है. सो इन सच केसेस ओनली वी जस्ट गिव मेडिसिन लाइक एनी अदर मेडिसिन या फिर फेन्यूग्रीक के सीड्स हम ऐसे ही केसेस में देते हैं ताकि मिल्क फ्लो उनका जो है वो स्टार्ट हो. बढ़े उसके लिए नहीं, बट स्टार्ट हो जाए ताकि बच्चे का फीडिंग हम चालू कर सके. बाकी चीजों में अगर नॉर्मल डिलीवरी है, अगर बच्चे और मदर का फीड एकदम परफेक्ट है, बच्चे की डिमांड के हिसाब से मिल्क बन रहा है, सप्लाई हो रहा है, सो वी डोंट सजेस्ट फेनुग्रिक सीड्स और एनी अदर प्रोडक्ट्स, मिल्क एनहांसिंग और मिल्क इंक्रीजिंग प्रोडक्ट्स इन सच केसेस.
Okay, there is a question from someone कि 40 दिन की बेटी है उनकी एंड शी इज वॉमिटिंग 3 to 4 times, 3 से 4 बार दिन में वॉमिट हो रहा है उनको. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले तो ये 3 से 4 बार जो वॉमिट है वो एग्जैक्टली वॉमिटिंग ही है, उल्टियाँ ही है, या सिर्फ बच्चा जो दूध पी रहा है वो दूध बाहर आ रहा है, ये आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए. अगर उसको सच्ची में वॉमिटिंग हो रही है दिन में 3 से 4 बार और बच्चे का फीडिंग अफेक्ट हो चुका है, सो प्लीज आप मेक श्योर कीजिए कि आप पीडियाट्रिशियन को जल्द से जल्द दिखा दीजिए. अगर ये दूध की उल्टियाँ हो रही है तो इट्स अ इंडिकेशन कि ये जो है वो ओवर फीडिंग के कारण हो सकता है कि बच्चे को दिन में 3 से 4 बार वो बहुत भूखे होते हैं तो वो लोग फटाफट 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 ज्यादा दूध पी जाते हैं. सो ज्यादा दूध पीते हैं तो ओवर फीडिंग कर लेते हैं, तो इसके लिए वो लोग दूध बाहर निकालते हैं. तो ऐसे केसेस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि बच्चा आपका बहुत ही ज्यादा भूखा ना रह जाए. तो अगर आपको अगर 40 दिन का है तो आपको फीडिंग शेड्यूल थोड़ा बहुत अंदाजा रहेगा कि आपको 1.5 घंटे में बच्चे को फीड करना है या 2 घंटे में आपको बच्चे को फीड करना है. तो सिंस आपके बच्चे को बहुत ज्यादा ही भूख लग जाती है तुरंत, सो यू कैन वेट. आप 1.5 घंटे की जगह पे आप उसको 1.25 घंटे में फीडिंग के लिए ले लीजिए. अगर 2 घंटे का पीरियड है तो आप उसको 1.25 घंटे में ले लीजिए, ताकि फिर वो ओवर फीड ना करे. वो जितना डिमांड है, जितनी भूख है, उतना ही फिर वो फीडिंग करेंगे. ओके, सो अगर आपको दूध कम आ रहा है, सो ये एक्चुअली दिस इज एन इंडिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आपको दूध क्यों कम आ रहा है. सो यूजुअली कोई भी मदर में दूध का सप्लाई जो है वो कम नहीं होता है, वो डिमांड पे होता है. अगर आप बच्चे को हर 2 घंटे में फीड करोगे, अगर आप बच्चे को रात के समय में, क्योंकि रात के समय में 11 PM to 5 AM के बीच में जो है वो जो दूध बनाने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, वो बहुत ही ज्यादा होता है. तो ऐसे टाइम पे आप बच्चे को फीड कर सकते हो ताकि आपका मिल्क फ्लो जो है वो बढ़े. अगर आपको लग रहा है कि आपको दूध कम आ रहा है तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सच्ची में कम है कि नहीं. सो उसके 4 तरीके हैं. वन, आपको ये जानना पड़ेगा कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो बेबी को, तो बच्चे का जो फीड है वो हर 2 घंटे में है कि नहीं. अगर बच्चा खुद से हर 2 घंटे में फीड मांग रहा है, सो 2 आवर्स का जो गैप है वो इनफ गैप है कि बच्चा 2 घंटे में भूखा होने ही वाला है. सो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको दूध कम पड़ा है. दूसरी चीज कि बच्चे की यूरिन एंड पॉटी. सो यूरिन जो है, बच्चा अगर आप उसको डायपर में रख रहे हो या अगर उसको ऐसे ही लंगोट में खुला रख रहे हो, तो बच्चे की यूरिन कहीं पे भी एनी टाइम बिटवीन 8 to 10 या 8 to 12 times इन अ डे होना चाहिए. दैट मीन्स बच्चे को इनफ दूध मिल रहा है, इनफ पानी मिल रहा है, तो बच्चे का जो फीड है वो प्रॉपर है, यानी आपका दूध जो है वो बराबर बन रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बच्चे का वेट. अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कर रहे हो और उसके बेसिस पे आपके बच्चे का वेट अगर अच्छे से बढ़ रहा है, सपोज आपके बच्चे का वेट हर हफ्ते का 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम, 100 to 125 ग्राम्स पर वीक अगर बेबी का वेट बढ़ रहा है, तो दैट्स अ गुड इंडिकेशन दैट बेबी को सही से दूध मिल रहा है. इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन जस्ट see the milk, you can just express and see the milk amount. But to be very frank, express करके जो milk amount दिखता है और जो baby directly feed करता है milk amount, वो completely अलग रहता है. क्योंकि जब baby directly feed करता है तो पूरा जो मिल्क है वो फ्रेश बन के आता है. जब आप एक्सप्रेस करते हो तो जो स्टोर्ड मिल्क होता है उतना ही एक्सप्रेस होके आता है. सो ऐसा खुद के ऊपर डाउट मत रखिए कि आपको मिल्क फ्लो कम है. ये बहुत कॉमन होता है कि आजू बाजू के लोग भी आपको आके बोलेंगे कि आपके बच्चे को दूध कम मिल रहा है, दूध कम मिल रहा है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है.
आप सिर्फ डिमांड फीडिंग कीजिए, आपका बच्चा जब मांगता है तब फीड कीजिए, तो आपका मिल्क फ्लो बराबर बनते जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट थिंग, अगर आपका बच्चा अच्छे से 2 घंटे 2.5 घंटे अच्छे से सो रहा है, so that's an indication that your milk flow is absolutely normal, absolutely proper, so उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके मिल्क में। और अगर इसके बावजूद भी ये सब करने की, ये सब देखने के बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका दूध कम है, सो यू कैन, ऑल यू कैन डू इज यू कैन मेक श्योर कि आपका दूध जो है वो आप you can consult a lactation consultant, क्योंकि medicines I cannot tell you medicines over here unless and until आपको मुझे पक्का पता हो कि आपको milk flow कम ही है। So there are certain medicines, so you can take those medicines to increase the milk flow, but हम ये medicines सिर्फ और सिर्फ तभी ही देते हैं अगर absolutely necessary है, तो otherwise सिर्फ बच्चे के feeding से ही milk flow बढ़ेगा। Okay, I would like to say the last few things is that एक जो मेरा टॉपिक था, that was the good latch. So to understand the good latch, I would like to tell you all how the exact good latch is. So अगर आपको good latch जानना है तो आप कैसे देख सकते हो, तो जैसे सबसे पहले जो है वो आपको बच्चे को, जब आप बेबी को पोजीशन में ले रहे हो, मेक श्योर दैट यू टेक द बेबी इन द पोजीशन प्रॉपरली। ओके, यू डू नॉट लीन फॉरवर्ड, आप आगे नहीं जाओगे, आप बेबी को अपनी तरफ लोगे और बच्चे का पूरा मुंह खुलेगा तभी ही आप बेबी को ब्रेस्ट की तरफ लोगे। अगर बच्चे का पूरा मुंह खुला है तो ही उसका लैच प्रॉपर होगा। अगर आप अपना ब्रेस्ट ऐसे बेबी के मुंह के अंदर पुश करने की कोशिश करोगे तो वो लैच प्रॉपर नहीं होएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर लैच प्रॉपर देखना है तो बेबी का माउथ वी शेप में, ऐसा वी शेप में ओपन होना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू सी, यानी उसके लिप्स जो है वो ऐसे ओपन होने चाहिए। दिस इज द वे द लिप्स शुड बी ओपन। Once the lips are properly open like that, apart, the second thing that you can check is baby के गाल जो है वो फूले हुए होने चाहिए। Why? Because जब हम, अगर latch proper नहीं है, अगर दूध आ नहीं रहा है, अगर हम कोई चीज, अगर हम फ्रूटी पी रहे हैं सपोज और मैं स्ट्रॉ दबा दूं तो हमारे गाल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं और फ्रूटी आ नहीं रही है तो हमारे गाल अंदर चले जाते हैं। अगर किसी बच्चे के गाल ऐसे अंदर गए हैं फीडिंग के टाइम पे, दैट मीन्स उसका लैच प्रॉपर नहीं है। तो अगर आपको लैच प्रॉपर जानना है तो बच्चे के गाल अच्छे से ऐसे बाहर होने चाहिए और फूले हुए होने चाहिए। इसका ये आइडिया होता है कि मिल्क प्रॉपरली आ रहा है और बच्चे के मुंह में दूध भरा हुआ है। लास्टली बट नॉट द थिंग, दैट यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप बच्चे को फीडिंग के लिए लो तो ये एरिया में आप देखोगे कि बच्चे का जो है वो स्वैलोइंग है। जब बच्चा निगलता है तो ये आपको यहाँ पे दिख के आएगा। अगर वो नहीं दिख के आता है तो आपको एटलीस्ट आवाज आएगी बच्चे की। जब बच्चा दूध पी रहा है तो उसकी आवाज आती है, वो आवाज इज नोन एज क्लिकिंग। सो वो क्लिकिंग साउंड या स्वैलोइंग साउंड, जब हम निगलते हैं तो वो एक साउंड आता है, दैट्स अ गुड इंडिकेशन दैट द बेबी इज फीडिंग प्रॉपरली एंड परफेक्टली। दैट्स योर इंडिकेशन कि जो लैच है वो परफेक्ट है। सो चार चीजें, और चार चीजें ऑफ गुड अटैचमेंट या गुड लैच के इज, फर्स्ट इज माउथ शुड बी वाइड ओपन, सेकंड इज बेबी के चीक्स फिल्ड होने चाहिए, थर्ड इज स्वॉलोइंग आपको दिखना चाहिए, एंड फोर्थ इज आपको बेबी का स्वॉलोइंग का साउंड या क्लिकिंग साउंड आना चाहिए। दीज आर द 4 साइंस ऑफ अ परफेक्ट और अ गुड लैच. So I would like to end it here. I hope that I have answered as many questions as possible and it might help many new mothers at least.
You can follow me on BabyChakra. I keep posting many things indicated for pregnancy nutrition and pregnancy exercises. So you can just follow me on BabyChakra. So signing off. Bye bye.